Human tissue. Histology. The study of tissues. Tissues. Human body tissue consists of groups of cells with a similar structure working together for a specific function. Tissues. Tissue. Human body tissue consists of groups of cells with a similar structure working together for a specific function. Four main tissue types in the human body. 1. Epithelial. Covers body surface and lines body cavities. X. Skin, epidermis, and inside of mouth. 2. Connective. Binds and supports body parts. X. Blood, bones, cartilage, and fat. मानव कोशिका ऊतक विज्ञान, ऊतकों का अध्ययन। ऊतक, मानव शरीर के ऊतकों में समूह होते हैं। समान संरचना वाली कोशिकाएं काम कर रही हैं एक विशिष्ट कार्य के लिए एक साथ। ऊतकों ऊतक, मानव शरीर ऊतक से बना होता है। समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह किसी विशिष्ट कार्य के लिए मिलकर काम करना। मानव शरीर में 4 मुख्य ऊतक प्रकार। 1. उपकला, शरीर की सतह को कवर करता है और शरीर की गुहाओं की रेखाएं। उदाहरण, त्वचा, एपिडर्मिस और मुंह के अंदर। 2. संयोजक, शरीर को बांधता है और सहारा देता है भागों। उदाहरणार्थ, रक्त, हड्डियां, उपास्थि और वसा। 3. Muscular. Moves body parts. X. Cardiac muscle contracts to pump blood through the body. Skeletal muscle moves the bones when directed by brain. Smooth muscle contracts in digesting. 4. Nervous. Receives, interprets and sends signals. X. Brain tissue, spinal cord tissue, peripheral nerve cells, epithelial tissue. Epithelial tissue locations. Covers the body, lines the cavities, tubes, ducts and blood vessels. Inside the body. Covers the organs inside body cavities. Epithelial tissue functions. Protection from physical and chemical injury. Protection against microbial invasion. Contains receptors which respond to stimuli. Filters. Secretes and reabsorbs materials and secretes serous fluids to lubricate structures. मांसपेशीय, शरीर के अंगों को हिलाता है। पूर्व, हृदय की मांसपेशी रक्त पंप करने के लिए सिकुड़ती है शरीर के माध्यम से। कंकाल की मांसपेशी जब हड्डियों को गति देती है मस्तिष्क द्वारा निर्देशित। पचाने में चिकनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। 4. घबराया हुआ, प्राप्त करता है, व्याख्या करता है और भेजता है संकेत। उदाहरण, मस्तिष्क ऊतक, रीढ़ की हड्डी ऊतक, परिधीय तंत्रिका कोशिकाएं। उपकला ऊतक, उपकला ऊतक स्थान, शरीर को ढकता है। गुहाओं, नलिकाओं और रक्त वाहिकाओं को रेखाबद्ध करता है। शरीर के गुहाओं के अंदर के अंगों को ढकता है। उपकला ऊतक कार्य, शारीरिक और रासायनिक चोट से सुरक्षा, सूक्ष्मजीवी आक्रमण से सुरक्षा। इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, सामग्री को फिल्टर, स्रावित और पुनः अवशोषित करता है और संरचनाओं को चिकनाई देने के लिए सीरस तरल पदार्थ स्रावित करता है। Connective tissue. Connective tissue. Most abundant and widely distributed tissue. Connective tissue functions. Connects, binds and supports structures. Tendons, ligaments, etc. Protects and cushions organs and tissues. Insulates, fat, and transports substances, blood. Muscle tissue. Muscle tissue. Associated with the bones of the skeleton, the heart, and in the walls of the hollow organs of the body. Muscle tissue functions. Movement, locomotion, maintains posture, produces heat, facial expressions, pumps blood, peristalsis. संयोजी ऊतक, सर्वाधिक प्रचुर एवं व्यापक रूप से वितरित ऊतक। संयोजी ऊतक कार्य, संरचनाओं को जोड़ता है और सहारा देता है। कंडरा, स्नायुबंधन आदि। अंगों और ऊतकों की सुरक्षा करता है और उन्हें सहारा देता है। इंसुलेट, वसा और पदार्थों, रक्त का परिवहन करता है। मांसपेशियों का ऊतक, मांसपेशी ऊतक, कंकाल, हृदय की हड्डियों से संबद्ध और शरीर के खोखले अंगों की दीवारों में। मांसपेशी ऊतक कार्य, आंदोलन, गति, मुद्रा बनाए रखता है, गर्मी पैदा करता है, चेहरे के भाव, रक्त पंप करता है, क्रमाकुचन। Nervous tissue. Nervous tissue. Main component of the nervous system, i.e., brain, spinal cord and nerves.
nervous tissue functions, regulates and controls body functions, generates and transmits nerve impulses, supports, insulates and protects impulse generating neurons. Identify the following cell organelles. Cell organelles: cell membrane, cytoplasm, nucleus, nuclear membrane, nucleolus, chromosomes, chromatin, दिमाग के तंत्र, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका तंत्र का मुख्य घटक, यानी मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं। तंत्रिका ऊतक कार्य, शरीर के कार्यों को नियंत्रित एवं नियंत्रित करता है। तंत्रिका आवेगों को उत्पन्न और संचारित करता है। आवेग का समर्थन, इंसुलेशन और सुरक्षा करता है। न्यूरॉन्स उत्पन्न करना। निम्नलिखित कोशिकांगों को पहचानें। कोशिका अंग, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक, परमाणु झिल्ली, न्यूक्लियोलस, गुणसूत्र, क्रोमैटिन। Identify the 5 stages of mitosis. Stages of mitosis, or the cell cycle. Interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase, interphase, metabolic phase, cell growth, DNA replication, centriole replication, protein synthesis, visible nucleus and nuclear membrane, visible nucleoli, chromatin. Prophase, nuclear membrane, disappears. Nucleoli disappear. Chromosomes appear. Centrioles move to opposite sides of cell. Spindle fibers from centrioles connect with chromosomes. Metaphase. Chromosomes line up on equator of the cell. Anaphase. Chromatids from each chromosome separate and are pulled to opposite sides of the cell. Telophase. Chromatids reach extremes of cell. Nuclear membrane reappears around each chromatid. Cluster. Nucleoli reappear. Cell plate appears between nuclei. Cytokinesis occurs. Specific tissue types and representative cell types. We will review epithelial, squamous, cuboidal, columnar, connective, adipose, bone, hyaline cartilage, muscle, nervous, squamous epithelium, simple, one cell, thick, forms solid layer of cells which line blood vessels, body cavities, and cover organs in body cavities. Stratified, multiple layers, forms epidermis. Cuboidal epithelium, simple, one cell thick, roughly cube-shaped, line ducts in kidneys, etc., where reabsorption and secretory activities take place. Columnar epithelium, simple, one cell, thick, column-shaped, long, and narrow, line digestive tract, where reabsorption and secretion occurs. Pseudostratified, gives the appearance of more than one layer of columnar epithelial cells. Specific connective tissue types: adipose, bone, hyaline cartilage, connective, adipose, honeycomb or chicken wire. Appearance: stores energy, fat, insulates, supports and protects organs. Connective, bone, tree ring-like. Appearance: supports and protects mineral storage, fat storage, blood cell production. Connective, hyaline cartilage, supports while providing flexibility, absorbs compression between bones in joints. Articular, cartilage, holds open respiratory passages. Most abundant type of cartilage in body. Specific muscle tissue types: muscle, skeletal, muscle fibers, cells, long, parallel and cylindrical, with many nuclei, multinucleate, striations, cross, stripes run perpendicular to the cells, produce voluntary movement, locomotion, heat. Specific nervous tissue types: nervous, neuron, branching cells with many long processes, large central nucleus, transmit impulses from one area of the body to other areas, regulate activities through neuron impulses.